morning, my students. Today I will talk about the generating functions. So first we define the generating function. Let a equal to a naught a1 up to ar and so on is a numeric function where a naught a1 ar is the values. Then the infinite series like that gx is equals to a naught a1x a2x square and so on, which is so on, it's called the generating functions. This series can be written as summation of r equal to 0 to infinity ar x to the power r. So this series, that means this one gx, is called the generating function of a numeric function a, where numeric function a is the tuples, that means the values a naught a1 ar. Okay, so this one is the generating function. Basically generating function is a infinite series, it's called the generating function. So next, trying to solve this some problems. So first problems is find the generating functions. Find the generating function of the following sequence. So sequence is 2, 6, 18, 54, 162. That means this one is the values of a naught. This one is the sequence, can be written as the numeric functions. So a equal to, this one is a naught, a1, a2, a3, a4 and like that so on. So generating function is gx is equals to a naught. So a naught is here 2 plus here is x to the power 0 because r equal to 0 to infinity. So a 0 x naught and a1 x1. So and a1 is 16 6x 18x square and like that. Now take the common 2 from the whole of the series, so which can be written as 1 plus 3x square. Here is 9x square, so 9x square can be written as 3x square. Here is 2 is common, so 27x cube, which is can be written as 3x to the power cube. Here 81x4, so this can be written as 3x to the power 4, this one. Now this is the part of the binomial theorem, so which is the expansion of 1 minus 3x minus inverse, which can be convergent, which is convergent mode of when mode of 3x is less than 1. That means this expansion can be valid. This expansion is valid when mode of 3x should be less than 1. If 3x is less than 1, then this can be written as like that, 1 minus 3x to the power minus 1. So which can be 2 upon 1 minus ka here is 3x, not 3. 2 upon 1 minus ka 3x. So mode of x is less than 1 by 3. Okay. So this one is the generating function of 2, 6, 18, 54, 162 like that. Next problem, 1 minus 1, 1 minus 1. Here is a naught is 1, a1. So this value is can be written as, which is the 1 plus x inverse. Again mode of x is less than 1. So generating function of this sequence is 1 upon 1 plus x. Next problems is 0, 1 minus 2, 4 minus 8, 16. So here substitute the value. Here a naught is 0. So series start from a1. a1x, a2x square, so like that. Here x is common, so again 1 minus 2x is this, and this series is valid when mode of 2x is less than 1. That means mode of x is less than 1 by 2. So this can be written as 1 minus 2x to whole inverse, which can be written as x upon 1 minus 2x is the generating function of this sequence. Next, find the generating functions of the following numeric functions. Now function now given the array term of the sequence, here terms given, here a0, a1, a2, a3, 1 by 1 terms is given, but here array term is given. Basically we can find a0, a1, a2, a3
So a0 is equals to 2, a1 is equals to 5, and so on. So here basically n atom or r atom is given. So find the generating function. दैट मीन अगर हम हमें ए नॉट ए वन ए टू ना दे के अगर हम उसकी डायरेक्ट आर टर्म अगर हमें गिवन है तो हम ए नॉट ए वन ए टू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर हम उसकी आर टर्म से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जनरेटिंग फंक्शन को। या हम इन क्वेश्चनों में भी जो हमने ऊपर प्रॉब्लम्स की थी इनकी आर टर्म अगर हम निकाल लें, इसकी आर टर्म क्या होगी -1, हाँ -1 टू द पावर r माइनस के 1 इज दी आर टर्म। तो इसकी आर टर्म के थ्रू भी हम इसको जनरेटिंग फंक्शन को हम कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। सो आर टर्म के थ्रू अगर हम इसका निकालें तो क्या होगी आर टर्म जनरेटिंग फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू आर इक्वल टू 0 टू ए आर एक्स टू द पावर आर, या ए आर इज इक्वल टू 3r + 2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू आर इक्वल टू 0, सो बेसिकली दिस वन इज 2, 5, दिस वन 2 + 5x + 8x² + 11x³। Now try to solving this series. So this series can be written as, now first multiply by this one is the value of gx, now multiply by on the both side by x of this series, this terms. So x gx 2x + 5x² + 8x³ plus 11x to the power 4 and so on. So this one. Next, now subtracting the gx minus x gx. So this term, और ये वैल्यू हमें कैसे लिखनी है, इसको हमें कैसे लिखना है कि इस 2x 5x² 8x³ को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से तो एक एक टर्म छोड़ के लिखना है। मतलब 5x के नीचे 2x, 8x² के नीचे 5x², 11x के नीचे, इस तरीके से हमें लिखना है। क्योंकि ये जो सीरीज है ये सीरीज कैसी है, एपीजीपी सीरीज है, और एपीजीपी सीरीज का सम करने का जो मेथड है वो इसी तरीके से है। दिस वन इज द एपीजीपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। So this one is the gx minus x minus gx. So 2 is 2, 5x minus 2x is 3x, 8x² minus 5x² 3x², and like that. So here is 1 minus x gx, 2 is common. Now common is 3x. So 1 plus x plus x². Or this one is the 1 plus x plus x². So 2 plus 1 upon 2 plus 3x upon 1 minus का x, which can be written as 1 minus x is divided by, so here is 2 minus 2x is 2 plus x upon 1 minus x² is the generating function of given numeric function. Here numeric function is given 1 upon r plus 1 factorial. So this can be done by like that, r equal to 0 to 1. So now common is 1 by x. No, x is multiply and x is divide. Yeah, 1 by x is common. So here is x plus x² by factorial 2. Or this one is the, we know that e to the power x is equals to 1 plus x plus x² by factorial 2. So this one is the 1 add, 1 subtract. Or this can be written as e to power x minus 1. So basically the generating function of this one is gx is equal to e to the power x minus k1 upon x. That's next problem. Determine the numeric functions corresponding to each of the following generating function. Now given that the generating function gx, now trying to find the numeric function. What is the numeric function if generating function is given? अभी तक हमें क्या था, न्यूमेरिक फंक्शन गिवन था, हम जनरेटिंग फंक्शन निकाल रहे थे। अब हमें जनरेटिंग फंक्शन गिवन है और हमें न्यूमेरिक फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो हमें वो कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे फर्स्ट हमने इसको फैक्टराइज किया, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने पर ये आएंगे x - 4 x - 3। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया, तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको लिख सकते हैं 1 upon x - 4 minus 1 upon x minus का 3, कैन बी रिटन बाई दिस वन।
1/3 माइनस एक्स माइनस 1/4 माइनस का x. So here 3 is common, so 1/3 1 minus x by 3 whole inverse, 4 is common, 1/4 1 minus x by 4 whole inverse. So this one equal to, again binomial theorem, so r equal to 0 to infinity x by 3 to the power r minus 1/4 r equal to 0 to infinity x by 4 to the power r. So this one can be written as 1/3 is multiplied, so 1/3 to the power r plus 1 minus 1/4 to the power r plus 1 x to the power r. So numeric which is compare the generating function gx is equal to summation of r equal to 0 to ar x to the power r. So ar equal to this one. So this one is the numeric function of this generating function. Okay. So ये हम इस तरीके से जनरेटिंग फंक्शन या न्यूमेरिक फंक्शन को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लीनियर रिकरेंस रिलेशन को हम सॉल्व करना हमें जनरेटिंग फंक्शन से. हमने लीनियर रिकरेंस रिलेशन को हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशंस के थ्रू. अब हम इसको देखेंगे कि हम किसी भी लीनियर रिकरेंस रिलेशन को भी हम जनरेटिंग फंक्शन से किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ दी एक पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन कि जनरेटिंग फंक्शंस के थ्रू हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.